Hello everyone, welcome back to my channel, and if you are new to my channel, my name is Nausheen and I make videos on makeup and skincare. So today in this video I am gonna be sharing all those makeup essentials which you should carry while traveling, or you can say all those makeup essentials which I carry while I travel. So if you want to know what are those products, then please continue watching. But before that, if you haven't subscribed to my channel yet, then please take a moment and subscribe to my channel. So as you can see, these are the package or the my makeup kit, whatever you can say that. So let's start with moisturizing part. I am carrying this Good Vibes Rose Hip Radiant Glow Face Serum with me. तो आपको हमेशा मॉइस्चराइज करना है अकॉर्डिंग टू द प्लेस जहाँ पे आप रहते हैं और जहाँ आप ट्रैवल कर रहे हैं. अगर आप अपने फेस को मॉइस्चराइज नहीं करेंगे तो मेकअप आपका बहुत ही केकी लग सकता है, और आपकी अगर ऑयली प्रोन स्किन है तो फिर बाद में ऑयल आ सकता है. तो मॉइस्चराइजिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन कैरी मॉइस्चराइजर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस एंड प्रेफरेंसेस और अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप. So I am carrying this right now. Now moving towards very important product, that is sunscreen. आप कहीं भी जा रहे हो, स्पेशली फॉर हॉलीडे और हॉलीडे वेकेशन, या कहीं किसी शादी में या किसी भी और रीज़न के लिए आप कहीं भी जा रहे हो, तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कैरी करना है वो है सनस्क्रीन. So I am carrying Photo Stable sunscreen by Bello. This sunscreen is recommended by my dermatologist and I am using this sunscreen ever since she recommended me. So this is one of my go-to product when it comes to sunscreen. I just apply this sunscreen only. तो आपको भी आपके चॉइस का सनस्क्रीन लगाना है और अपने साथ कैरी करना है. और जो दूसरा प्रोडक्ट है आफ्टर सनस्क्रीन, दैट इज़ प्राइमर. तो आप कहीं भी जा रहे हो, मेकअप अगर आप कर रहे हो तो आपको प्राइमर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है. तो प्राइमर के लिए मैं ले रही हूँ मेबलिन मास्टर प्राइम प्राइमर विच लुक्स लाइक दिस. ये प्राइमर बहुत ही अच्छा प्राइमर है. एक तो ये बहुत ईजीली आपके वैनिटी में या आपके पाउच में आ जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स पैकेजिंग. ट्रैवल फ्रेंडली है, तो दैट्स वाई आई एम टेकिंग दिस प्राइमर. एंड ये प्राइमर है भी बहुत अच्छा बिकॉज ये पोर्स को ब्लर आउट कर देता है और एक अच्छा लुक प्रोवाइड करता है आपके मेकअप को. सो आई एम टेकिंग दिस प्राइमर. नाउ दूसरा प्रोडक्ट जो है वो है फाउंडेशन. एंड फाउंडेशन के लिए मैं ले रही हूँ लॉरियल का इनफैलिबल फाउंडेशन प्रो मैट फाउंडेशन. अगेन ये एक तो बिल्डेबल कवरेज प्रोवाइड करता है एंड जो पैकेजिंग है वो काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली है और लाइट वेट है, और इजीली आप इसे अपने फेस पे लगा सकते हो, अपने फिंगर्स की हेल्प से भी लगा सकते हो और ब्यूटी ब्लेंडर की भी हेल्प से लगा सकते हो. बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है और बहुत ज़्यादा केकी भी नहीं करता आपके फेस को. इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, सो दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड फॉर दैट. सो जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है हमारा कंसीलर. एंड कंसीलर के लिए मैं एवॉन का ये कंसीलर ले रही हूँ. 2 कंसीलर ले रही हूँ एंड यू ऑल नो दैट एक लाइट है, एक थोड़ा सा मीडियम है. एंड फ्रॉम सम डेज आई एम क्वाइट ऑब्सेस्ड विद दीज 2 कंसीलर्स बिकॉज एक तो ये मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये आपको पता है बहुत ही कॉम्पैक्ट है और ये ईजीली आपके पाउच में आ जाएगा. ट्रैवल फ्रेंडली है फर्स्ट. दूसरा, आप इसे अपनी फिंगर्स की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं, तो आपको ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश की ज़रूरत नहीं है. थर्ड इसका गुड पार्ट ये है कि आप इसे बिल्ड भी कर सकते हो. उसके बाद अगर आपको फाउंडेशन नहीं लगाना है तो सिर्फ ये कंसीलर्स लगा के भी आप अपना मेकअप कर सकते हैं. I have confidence on these products, that's why I am taking with me. I know if I don't use any sort of foundation in my makeup routine, I'm just gonna use this and I am good to go. So the next product which I am carrying with me is a MAC Studio Fix Compact Powder. So the reason behind carrying this compact powder is that if I don't get time for doing my makeup, especially applying foundation and concealer, I'm just going to apply this compact powder
and I am good to go, because this compact powder will provide me coverage and it will stay on to my face for a longer duration of time. So that's why I am taking this product with me. And for blush, I am carrying this blush by Freedom. This is one of my favorite blush, and the shade is so pretty, I can't tell you guys, as you can see. And the shade is Rare, and this is very compact, small packaging. I can carry this anywhere, so that's why I'm taking this. And for contour, I am taking this Maybelline Master Contour Face Contouring Kit. It has contour powder, blush and highlighter. I don't need to carry different products. It's just a 3-in-1 products. That's why I'm carrying this. And the other product, which is most important, that is eyeshadow. So I am taking this Wet n Wild Rose in the Air eyeshadow palette. This is my go-to palette. ये जो है आपको every event के लिए ये eyeshadow palette apt है. That's why I'm taking this with me. And to set my face, I'm gonna take this LA color setting spray, because the most important reason is that ये बहुत ही छोटा सा है. I mean, देखो ऐसा इतने में ये पूरे पाम में आ जा रहा है, तो ये मैं इसीलिए ले रही हूँ. और इसकी जो फिनिशिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू कैन डू इज दैट this beam up illuminator. If you want to carry a illuminator, you can pour this in a small container like this, as you can see. So let's talk about the brushes. I'm carrying brushes in this sort of box. So as you can see, for applying blush and powder, I'm carrying this fluffy brush with me. And for contour, I'm carrying this angled brush with me. Then for applying highlighter or other things, I'm carrying this brush. For eye makeup, I'm carrying these brushes with me. This is for applying concealer onto my eyelids, and this is for applying eyeshadows onto my eyelids, like for blending, for dabbing, or for lower lash line. So I'm carrying these brushes. And as a brow product, I'm carrying this Miss Claire eyebrow pencil, because it's very compact and I have sharpened it already, so there is no need to sharpen it again. So this is it with the face makeup. Now coming towards mascara and liner, I'm carrying 3 eyeliners with me. The one is the brown eyeliner, one is the black, and the other one is blue. And for liquid liner, I'm carrying this LA Colors liquid liner. And for mascara, I'm carrying Wet n Wild Mega Length mascara, and this is waterproof mascara. That's why I'm carrying this. Now moving towards lips. So I have quite a lot of lipsticks, because as you all know, I am very obsessed with the lipsticks. So my 3 favorite lipsticks are Maybelline Superstay Matte Ink Lipstick. I'm carrying all 3 lipsticks with me. The shade is Self-Starter, Seeker and the Voyager. The most important reason behind carrying these lipsticks is that they stay onto your lips for longer, or I can say the longest duration of time. Yes, ये बहुत देर तक आपके लिप्स पे रहती है. ये आपके लिप्स में कम से कम 16 घंटे तो रहती ही रहती है. I have applied this lipstick so many times just to test. Like अगर मैं शाम को 7 बजे ये लिपस्टिक लगाई हूँ, अगले दिन मैं सुबह 9 बजे से रिमूव की हूँ, तभी भी ये लिपस्टिक जो है वो अपने जगह से हिलती नहीं है. और अगर आप कुछ भी ऑयली खा रहे हो, एनीथिंग, इफ यू आर ईटिंग एनीथिंग ऑयली और वाटरी, एनीथिंग, this lipstick won't fade away. Yes, that's why I'm carrying these lipsticks. And these 2 are my favorite. This is the Maybelline lipstick, the bullet lipstick in the shade East Village Rose. ये मेरा favorite shade है, इसलिए मैं ये ले रही हूँ.
एंड जो ये लिपस्टिक है ये मेरी अगेन फेवरेट लिपस्टिक है बाय शैम्बोर, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दीज 2 लिपस्टिक्स एज वेल। एंड अगेन मैं ये 2 लिपस्टिक्स निक्स की ले रही हूँ। ये जो शेड है वो है बुडापेस्ट एंड ये जो है ये है एक्सोटिका बाय NYX लिप लॉन्जरे, और ये दोनों भी बहुत ही अमेजिंग शेड्स है। आई एम कैरिंग अगेन 2 मिनी लिपस्टिक्स so that if I'm going out I can carry this into my bag. These two are from Sugar and this is from Nykaa. This is the shade Gul and जो Sugar की लिपस्टिक है उसका एक शेड है टोस्ट रोस्ट एंड ब्रिंक ऑफ पिंक। ये दोनों ही मेरे बहुत ही फेवरेट शेड्स हैं। तो मैंने जो लिपस्टिक है वो बहुत ही मेरी जो फेवरेट लिपस्टिक्स है वही मैंने कैरी की है, सो दैट मुझे कहीं ऐसा ना लगे ओ नो मैं अगर वो ला ली होती तो अच्छा रहता था, तो ऐसा मुझे फील ना हो। दैट्स व्हाई आई एम कैरिंग दीज लिपस्टिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट टू कैरी मिरर विथ यू। आई एम कैरिंग मिरर विथ मी so that मैं easily अपना मेकअप अप्लाई कर सकूँ। I'm also carrying a lip balm with me. This is the lip balm by Studio West in the shade Strawberry. This is very nourishing, moisturizing lip balm and I really love the fragrance of this lip balm. So and it has little bit tint into it. So if you want कि आपको लिपस्टिक नहीं लगाना है तो आप सिर्फ ये लगा के भी बाहर जा सकते हैं। And to remove all your makeup, you can carry micellar makeup removal wipes. This is by Cara. I'm carrying this with me in order to remove my makeup. You can even carry micellar water, oil infused micellar water, specially अगर आप super stay लिपस्टिक लगा रहे हैं, like Maybelline की अगर लिपस्टिक लगा रहे हैं तो आपको ऑयल इन्फ्यूज्ड माइसेलर वाटर ही यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल माइसेलर वाटर यूज़ करेंगे तो वो लिपस्टिक्स नहीं निकलने वाली, तो आप ये या ये दोनों में से कुछ एक यूज़ कर सकते हैं या आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल विथ माई makeup essential products which one should carry while traveling. So if you like this video, give it a thumbs up and also subscribe to my channel if you haven't already. और मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको इस टाइप के और वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके वो भी ज़रूर बताइएगा। एंड आई वुड लव टू नो योर व्यूज़ एंड सजेशंस, सो उसे भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के बताइए। So with that, it's a wrap. I will see you all super soon in my next video. Till then, bye, take care, stay happy and spread happiness.